Yes, the students can join now. Yes, who has joined? Can you please tell the name? Okay, good evening, Beta. That is nice that you have joined. Okay, so now your doubts are there. So I am going to take the doubts. Am I audible clearly, Beta? Please tell. Uh, yes. Okay. You have told exercise 6 point. Uh, can you please write once more the questions? Because I am taking the live class from the mobile. So I won't able to see the WhatsApp right now message. Exercise 6.2 you have told. So can you please tell me the question 6.2? Let me check. Could you please tell me? 6.2 question number 20. Okay, ठीक है. So 6.2 question number 20. It is one of the very good question. Okay. So question says, this is the question of find the value of P. If 2, is it visible? If 2x cube plus x square minus px plus 5 equals to minus 1 when x equals to minus 3. ठीक है, this is the question. So just understand at first. The very first thing is this. Here the question is given you in this format. ठीक है. Here they have given you that value of x is -3. ये इतनी बात समझ में आएगी कि जो वैल्यू ऑफ x है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपकी -3 है. ठीक है. नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले वट एवर आई कैन सॉल्व, आई कैन जस्ट ट्रांसपोज दिस 5 हियर. तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दिस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर minus px equals to -1. Before 5 plus sign is there. On the right side it will be -5. ठीक है. ये साइन चेंज हो जाएगा आफ्टर ट्रांसपोजिशन. अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पर स्टेप वाइज चलना प्लीज, है ना. तो नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप. द सेकेंड स्टेप विल बी सॉल्व दिस राइट साइड पोर्शन. सो इट विल बी -6. यहाँ तक हो गया. अब here what I will do, I will replace each term with the value of x. यहाँ पर x है, मतलब x और 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड x की क्या वैल्यू है? -3. -3 है, सो जस्ट कीप इट इनसाइड द ब्रैकेट, पुट द पावर ऑन इट. ये स्टेप समझ में आया? ये मैंने इसकी रिप्लेसमेंट की है. देन प्लस रिप्लेस दिस. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -3 टू द पावर -2. यहाँ पर इसको भी रिप्लेस करो. -p
मल्टीप्लाइड -3 एंड राइट साइड इज -6. यहाँ तक कोई दिक्कत है इस स्टेप में? This is what I have done. I have put the values. Put value of x. ये मैंने क्या किया है? मैंने x की वैल्यू को पुट किया है. अब जस्ट सॉल्व द वैल्यू ऑफ x बिकॉज इट इज द एक्सपोनेंट. तो पेड मास के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे. पेड मास मतलब द आफ्टर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के बाद हम एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं. तो इस एक्सपोनेंट को हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 9 विल बी मल्टीप्लाइड विथ -3. इसको यदि मैं यहाँ पर रफ में दिखाऊं आपको तो -3 टू द पावर 3. इसका क्या मतलब हुआ? -3 इज मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड बाई -3. 3 टाइम्स -3 भी मल्टीप्लाइड. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा. फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा -27. तो ये क्लियर हुआ. यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाइड -27 प्लस 9 माइनस प्लस प्लस 3p इक्वल्स टू -6. यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया. अब इसके बाद फिर से आपको सॉल्व करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू. हियर इट विल कम -54 प्लस 9 प्लस 3p इक्वल्स टू -6. नाउ solve -54 and 9. So what it will come? It is negative, it is positive. Subtraction will be done. So here it is going to come -45 plus 3p equals to -6. Then 3p equals to -6. Before 45 it is minus sign. So just change the sign, it will come +45. ठीक है. यहाँ पर इसको सॉल्व करो राइट हैंड साइड. तब तक लेफ्ट हैंड साइड विल बी कॉपीड डाउन एज इट इज. -6 प्लस 45 इट विल कम +39. Okay, now 3 and p are multiplied, so just on the other side it will come in the division. So the value of p will be 13. Yes. So is this question is clear? Okay. Now, Kritika, you have asked one more question as well. So just tell what is the another question. Those who have joined, if they are having the doubt, just ask the doubts. It would be better that you clear your doubt with the practice, or means I just want to say कि if you are having like today also you will do practice till night. तो आपको जो भी doubts आते हैं please send it on the comment box. I will plan one more class tomorrow also. So tomorrow I will plan the class in the like afternoon. 7.2 question number 11th B part. Okay. Exercise 7.2 question number 11th B part. The question says find the third proportional. What they are saying? Find the third proportional. ठीक है, this is the question. 2 3 meter 20 centimeter and rupees 4.80. ठीक है. तो बेसिकली the very first thing, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले कि क्या है. ठीक है, यहाँ पे ओके वेट आई एम जस्ट टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको. ठीक है. अच्छा, द
very first thing you need to understand here, third proportional. See, if A ratio B ratio C are in continued proportion, okay, if they are in continued proportion, okay, so this C is in where this C is known as the third proportion. ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, थर्ड proportion. अब थर्ड proportion का रिलेशनशिप कैसा होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द थर्ड proportion. ये समझ में आया कि इफ ए देर आर थ्री रेशियोज, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, and they are the in the continued proportion. So what is the relationship we get, b square equals to ac. ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये यहाँ तक क्लियर है. ओके, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको. अब यहाँ पर आप देखो कि what are the terms you have. You are having the terms 3 meter 20 centimeter, okay, and rupees 4.80. So this is B, this is A, and C you need to find out, right? तो आप क्या करोगे, the very first thing you write down this relationship, B square equals to AC. ठीक है, अब this is 3 meter 20 centimeter and this is already in the decimal, so just change it also into decimal. So what it will come, 3.20 meter. ये समझ में आ गया कि how we have done 3.2 meter, we have changed this centimeter into meter. Okay, so we have divided by 100 and then it will come 3.20 meter. अब what is the b square, b की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 4.80. तो आप b स्क्वायर लिख रहे हो तो जस्ट राइट डाउन 4.80 मल्टीप्लाइड 4.80. 2 times you are writing because it is a b square. Then a, what is the value of a, this is 3.2 meter. Now c, that you need to find out the third proportion. Now with C it is in the multiplication, on the other side it will be in division. So just bring it for the division. So what it will come, 4.80 multiplied 4.80 divided by 3.20. ठीक है, अब इसे आप कट कर दो तो 16 की टेबल में 48 भी आता है और 32 भी आता है. तो 16 3s are 16 2s are. Okay, now why I have written without decimal, because here also there are 2 digits after decimal, here also there are 2 digits after decimal, so their quotient will come in the whole number. Now cut it, 2 ones are 2, 2.40. ठीक है, इसे भी कट कर दिया. अब आपके पास क्या बचता है, 3 multiplied 2.40, so it will come 7.20. अब here we can see these two were in rupees, another dimension was in meter, so it will be coming into meter. So is that clear? Okay, what is the name of anime play pro, can you please tell your name so it will be easy for me to call you. Exercise 6.3 question number 23. ओके दिव्यांश, ठीक है. ओके, सो एक्सरसाइज, अच्छा दिव्यांश यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन ना, तो हियर ओनली वन मोर स्टेप इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू कैन डू द वे यू आर डूइंग. ओके, ओनली वन मोर स्टेप, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड यू, तो वो एक स्टेप जरूर कर देना. एक्सरसाइज 6.3 question number 23. So the question says the two supplementary angles differ by 30 degree. Okay, they are saying two supplementary angles differ by 30 degree. Find the angles.
Find angles. This is the question, right? So understand. The very first thing, suppose if you are having two angles, say you are having two angles, right? ठीक है, तो आप क्या करोगे? You are knowing that the sum of two angles is 180 degree, then these two angles will be known as the supplementary angle. Say you are having two angles A and B. So sum of that angles is always 180 degree. Then you will say then A and B are supplementary to each other. इतनी बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया कि if you are taking the two angles, their sum will be 180 degree, so they will be known as the supplementary angle. Okay, so up we are going to proceed with the solution. Let one of the angles in supplementary pair is x. ठीक है, so other angle, as the sum of these two is 180 degree, so other angle will be 180 minus x. This is the first step that you have to do. The first thing, let put both the angles. Now they are saying that the sum they differ, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? It is 30 degree. Okay, so according to question, first angle minus second angle equals to 30 degree. This is the question. As per the question, go ahead. So what was the first angle? It was x. Okay. And what is the another angle? 180 minus x. Keep it inside the bracket. Now 30 degree. Now open the bracket. X minus 180 plus x equals to 30 degree. Just solve it. So after solving, what you are going to get? 2x equals to 30 plus 180. Okay. So here only I am just telling you. Till here any problem? Till here it is clear? After that, 2x equals to 210. तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 210 अपॉन 2. So it will come x equals to 105 degree. So one angle is 105 degree. And what will be the another part? Another angle is 180 minus 105 degree, that is 75 degree. Okay, so this is the answer that we are going to get. So angles are 105 degree and 75 degree. Is that clear? Okay, now those who have joined, anybody else is having any problem? Please ask. This is the session that I am taking for solving your problems. If you are having any doubt in any of the chapter, you can ask. हाँ, ठीक है, बोलो दिव्यांश, what is the problem, other problems you are having? You can ask. Anybody can ask, those who have joined the class. Yes.
example 4 of which exercise 4 above 1.6. Can you please tell me the page number of this exercise only? This chapter exercise only. Example 4. Find the three consecutive number whose sum is 180 degree, 150. Divyansh, can you please tell me the page number if you can? Page number you tell. I have the new book. You tell me the page number. Acha, in the integer chapter. Can you tell me the page number 1.6? Okay. ये simplification of the brackets है. Simplify. No problem. Acha, tell me one thing. This is the question you are asking for. This one. This question you are asking for. Are you asking this question? Okay, ठीक है, I'm telling. Let me copy down the question. So basically this is the question which is based on, okay, simplification of brackets. The question is 5 minus 3 minus 2 minus 2 multiplied minus 3 plus 1, then plus 3 minus 5, then curly bracket closed, then big bracket closed. This is the question that you are asking for. Okay, so here you need to understand the very first thing, that we are going to solve the brackets in particular order and we are going to follow the board mass. बोर्ड मास में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, एंड इन द ब्रैकेट्स ऑल्सो वी सॉल्व द smallest bracket at first. So here there are two smallest bracket. This is the first bracket which is separated by plus sign. So in the same step you can solve these two. फिर यहाँ पर भी हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब इनसाइड दिस ब्रैकेट यू जस्ट सी देर आर टू ऑपरेशंस. वन ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर ऑपरेशन इज प्लस. तो हियर एज पर द लॉ मल्टीप्लिकेशन विल बी सॉल्व एट फर्स्ट. ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में दो चीज़ें सॉल्व होंगी. आई एम जस्ट पुटिंग द ब्लैक पेन अराउंड इट. तो हमारे पास सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा और ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी कॉपीड डाउन एज इट इज. तो 5 विल बी कॉपीड डाउन एज इट इज, 3 विल बी कॉपीड डाउन एज इट इज, करली ब्रैकेट 2 माइनस. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड माइनस 3 इट विल कम माइनस 6, ओपन द स्मॉल ब्रैकेट, माइनस 6 प्लस 1. अब when you have solved this, so its answer will come in the negative. So just keep it inside the bracket till you open this bracket. Now curly bracket will be closed and the big bracket will be solved. Up in the second step you are going to solve this portion and you are going to open this bracket. तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपके पास, rest of the numbers integers will be copied down as it is. 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज कॉपी डाउन होगा, माइनस 6 प्लस 5 प्लस 1. तो हियर इट विल कम माइनस 5. हियर प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, तो इट विल कम माइनस 2. देन करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पर आप क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों साइंस को सॉल्व करेंगे. यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू साइन.
Now, what it will come? 5 minus 3 minus 2. Now, minus multiplied with minus. What will come? Plus. Plus 5 minus 2. Right? Up here you can see there is 1, 2 plus, 1, 2 minus. So, these two will be cancelled out. That means their sum will come 0. So, what is going to left with you? 5 minus 3 minus inside the curly bracket only 5. Now open this. What you are going to get? 5 minus 3 minus 5. Again solve it. You are going to get 5 minus minus 2. Then just solve it. 5 plus 2. It is going to come finally 7. So in this way you can solve the complete question. Please don't skip the step. You will go with the steps. You will get the right answer. Okay. So are you clear with this? Is this solution clear? Okay. Now I guess this solution is clear. Yes. Tell me, anybody else is want to ask any other question of any chapter, whether it's data handling and mensuration, percentage, linear equation, integer, or any other question. हाँ पूछो, लीनियर इक्वेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछना है तुम्हें? टेल. पेज नंबर 123. Read the question. Example 7. Rita has this one. Rita has only 5 rupees and 20 rupees note in her bag. She has total 34 notes in her purse. The value of notes is this. Find the number of each kind of note. This is the question. Is this the question? Okay. Just wait for a minute so that I could write down the question, so that everybody, those who are not having this question, they can also understand. Okay. Has only rupees 5 and rupees 20 notes in her purse. She has in all 34 notes in her purse, and the value of the notes is rupees 530. Okay. Find number of each kind of notes. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जस्ट अंडरस्टैंड द नोट्स. नोट्स सबने देखे हैं, 5 रुपीज के नोट्स, 20 रुपीज के नोट्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एज पर द क्वेश्चन इफ यू सी कि रुपीज 5 के नोट्स हैं और रुपीज 20 के नोट्स हैं.
टोटल कितने नोट्स हैं हमारे पास? टोटल है हमारे पास 34 नोट्स। ठीक है, कितने नोट्स हैं? 34 नोट्स। क्लियर है? तो राइट नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द नोट्स आर देयर, सो एट फर्स्ट लेट एनी ऑफ द नंबर, मतलब या तो इधर यू अज्यूम कि लेट 5 रुपीज नोट इज एक्स, और you assume rupees 20 is x, so that you can find out the other note. So the very first thing, let rupees 5 notes be x. ठीक है, so रुपीज 20 नोट्स, ये कितने हो जाएंगे? टोटल तो 34 नोट्स ही है, तो 34 माइनस एक्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब हियर यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। If there are x note of 5 rupees, so what will be the value of 5 rupees note? Value of rupees 5 notes, that will be 5x. Okay, and what will be the value of rupees 20 notes? That will be 34 minus x multiplied 20. Okay, just solve it. So it will come 34 into 20 minus 20x. Now solve it. So it will come 680 minus 20x. Till here, I guess there is no problem. Now, what is the next line after conjunction? This end, the value of total is 530 rupees. That means, according to question, 5x plus 680 minus 2x equals to 530. Okay, this is the sum. Now find out 3x plus 680, 530. ठीक है, सॉल्व करो आप इसे। 3x इक्वल्स टू 530, कितने रुपए देने? मेरे पास में से 500 रुपए का नोट ले लो। नाउ माइनस 680। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व करो आप। Sorry, it is 20x, not 2x, it is 20x. So here it will come minus 15x. Make the correction, minus 15x. Minus 15x, solve it. उनके पास खुले नहीं है। एक मिनट बोलो, आ रही हूँ। आ रही है, वही जाओ ना। So x will be equals to minus 150 upon minus 15. तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10. So number of 5 rupees note 10, and number of 20 rupees note 34 minus 10, that is 24. Just check. If any doubt you are going to get anywhere in this question, you can message me, and other doubt question you can message so that I can tell you.